हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है हमारी सीरीज़ DSA द स्काला वे का एक स्पेशल एपिसोड। तो अभी तक हमारी सीरीज़ में DSA द स्काला वे में 10 एपिसोड्स आ चुके हैं और हर एक एपिसोड और हर एक वीडियो में हमने एक लीड कोड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है द स्काला वे, which means we have used immutable data structures, we have used functional solution, and we have never used loops in any of the solution. We have always used recursive solutions. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिकैप करेंगे उन 10 सॉल्यूशंस का, नॉट इन डिटेल बट वेरी ब्रीफ रिकैप, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या स्काला के कॉन्सेप्ट्स व्यू कर लिए हैं या कवर कर लिए हैं जिनको आपको और डिटेल में समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो as we discussed first and foremost in this series, what we are following is that we are using immutable data structures, which means वो डेटा स्ट्रक्चर जिनकी स्टेट को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता वंस क्रिएटेड। ओके, तो दिस माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव अगर आप इम्पेरेटिव कोडिंग करते आ रहे हैं तो, बट इन द फंक्शनल प्रोग्रामिंग दिस इज़ द वे टू गो, बिकॉज इम्यूटेबिलिटी प्रोवाइड सेफर कोड। एंड कोई भी शेयर्ड स्टेट नहीं होता, तो जब कॉन्करेंट एक्सेस होता है तो इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी एंड इट ऑलवेज गिव्स अ प्रेडिक्टेबल स्टेट. So immutability is at the heart of functional programming, and throughout these episodes, while we solve these problems, we have avoided mutable data structures and loops, favoring immutable variables and recursion. This makes our solution safer, more predictable, and easier to reason about. And next is we have always used recursion instead of loops. So instead of traditional loops like for loop or while loop, we have used recursion to iterate through data. And recursion combined with Scala's tail recursion call optimization, it is a great way to write efficient functional solutions without side effects. So tail recursion in Scala help us in avoiding the stack overflow problem, which is very common while using recursion in other languages. Next is pattern matching. So we have seen the power of pattern matching in problem like valid parentheses, and you can see the code also on the screen. So here it allowed us to elegantly handle different cases without the complex if else chains. So this leads to clearer and more readable code, as you can see on your screen. And one of the major takeaways from these episodes is developing the intuition to approach problems functionally, which means जो भी problem हम solve कर रहे हैं उसका functional solution कैसे approach करें, उसकी intuition को develop करना, इसकी एक takeaway भी है हमारे series का और एक purpose भी है. So that's what I want to do here with all the learners. And instead of thinking about changing state or iterating over arrays, we focus on what we want to achieve in each step of our recursion. So as we mentioned and as we discuss in every episodes wherever we try to solve the problem, that we will never be using loops, we will always use recursion, and this will put us on the path to a functional approach or a functional solution to the problem. So what you can do to approach a problem the functional way or the Scala way is that break the problem into pure functions. And if you have watched all the episodes or not yet, तो आप अभी जाके पुराने हमारे जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं उनको देखिए. That we have solved each problem by breaking it down into smaller pure functions that handle specific tasks without relying on shared mutable state. Okay. एंड नेक्स्ट इज़, जैसा कि मैंने कहा लूप्स की जगह हमें रिकर्जन यूज़ करना है. सो वी हैव टू थिंक रिकर्सिवली. एंड आपने देखा होगा फॉर प्रॉब्लम लाइक रिवर्स इंटीजर एंड पैलिंड्रोम नंबर वी रिपीटेडली रिड्यूस द प्रॉब्लम साइज by making recursive calls, right? And this pattern simplifies the logic and ensures immutability. So some of the best practices you can follow for problem solving the Scala way, for approaching and solving any problem the Scala way, is that you have to always start with a clear base case. So you should identify the simplest case in the problem first, and then that will be the base case or the exit condition for your recursive function, जो कि आपने हमारे पुराने solutions में देखा भी होगा. And the next is work with small input first. So before thinking about large inputs, consider how the function behave with the small inputs, right? Since here यहाँ पे आप कोई भी loop नहीं use कर रहे हो, you are working with the function.
So a function will behave the same way with the smaller input and the larger input. So if you think about the function with a smaller input, this will help you build intuition for the larger input as well. Next is avoid premature optimization. So as we discussed in this series and in the problem solving the Scala way, DSA the Scala way, our priority is ensuring that the solution is correct and readable and it is a functional solution. So once we have achieved that solution, then we can prioritize our optimization. So there is no need to prioritize optimization early on. First, let's write a working solution the functional way and then we can optimize it. Next is favor immutability and recursion. So as a rule of thumb, avoid loops and mutable data wherever possible. Functional programming encourages declarative problem solving where what you want is more important than how you achieve it. तो आई होप अभी तक के 10 एपिसोड्स में जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी हैं आपको उसमें मज़ा आया होगा और हमने जो स्काला के कॉन्सेप्ट सिंटैक्स एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अप्रोच डिस्कस की है वो भी आपको समझ आई होगी. If you have any doubts or any suggestion, please write it in the comment section. I will try to answer all the questions. तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.